Happy Women's Day to all respected sisters, respected women doctors और आप सबका स्वागत है। आज आप लोगों का दिन है, आप लोगों को समर्पित है और आगे की बागडोर भी आप लोगों के हाथ में दे रहा हूँ। डॉक्टर स्मिता नायक मैडम, प्लीज कंटिन्यू। Thank you, sir. Thank you. Welcome to all the members on this group, a very important platform of HSH, Team HSH with Dr. Ashok Avadia, and all of us welcome you to this special program of Women's Day. देखा जाए तो Women's, hello Dr. Tanzila, welcome to you. देखा जाए तो we have come very far off from the time जब हमको वुमेन्स डे चाहिए था। आज अभी का ये आलम है, मुझे लगता है रोज ही वुमेन्स डे है। In every field, in every profession, the women are leading together with their male counterparts. And मुझे ऐसे लगता है कि हर वुमेन के सक्सेस के पीछे भी उनके हस्बैंड, उनके फादर, उनके ब्रदर, उनके चिल्ड्रन, सबका उतना ही हाथ होता है। सो नॉट जस्ट वुमेन्स डे, बट आई वुड से दिस इज अ डे ऑफ सेलिब्रेटिंग वुमेनहुड. You know, we are celebrating, and today we as homeopaths, we have a very special contribution to give to the society. Let me just begin by quoting a very nice small poem. मैं आज की नारी हूं, मैं आज की नारी हूं, न तो मैं अबला हूं, ना तो मैं लाचार हूं, और ना ही मैं कमजोर हूं। मैं अपने पैरों पर खड़ी स्वतंत्र जिंदगी जीती हूं। मैं आज की नारी हूं। मैं अपनी परंपराएं खुद बनाती हूं। मैं अपने खुद के बनाए हुए रीति रिवाजों में विश्वास करती हूँ। मैं अपने धर्म कर्म के नियमों को खुद बनाती हूँ। मैं अपने पाप पुण्य का लेखा जोखा पूरी ईमानदारी से करती हूँ। मैं अपने समाज का निर्माण खुद करती हूँ। मैं आज की नारी हूँ। मैं आज की नारी हूँ। आज के युग की मैं नारी हूँ। अपने तकदीर की रेखाएं खुद बनाती हूँ। अपने दोनों हाथों में अपनी मान मर्यादा को लेकर आगे बढ़ती हूँ। अपने कर्तव्य और आदर्शों का पालन गर्व से करती हूँ। मैं आज की नारी हूँ। मेरा पति मेरा परमेश्वर नहीं, मेरा पति मेरा परमेश्वर नहीं, किंतु मेरा जीवन साथी, मेरा दोस्त, मेरा हम सफर है, जिनके कदम से कदम मिलाकर बड़े आत्मसम्मान के साथ और स्वाभिमान के साथ अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव को पार करती हूँ। मैं आज की नारी हूँ। अपनी लक्ष्मण रेखा मैं खुद खींचती हूँ। अपनी और अपने परिवार की रक्षा करती हूँ। मुझे अपने आप पर गर्व है। मैं आज की नारी हूँ। मैं आज की नारी हूँ। So with this small poem, I welcome all the homeopaths present on this forum today for a very beautiful program, a very beautiful sammelan of the homeopaths. We have our chief guests from all our group, from people who have been practicing for 30 years, for 20 years, for 10 years. We have doctors from across the globe. We have recent joinees also, newcomers, our new basic primary course. We have so many good homeopaths. And all of them are ready to learn, wanting to learn more. So I'm very proud of all our participants. So let us start with a small journey session, because sir has said कि 2 या 5 मिनट में अपनी journey को बताना है. So let me start with my own journey. I've been practicing homeopathy since the last 25 years in Vasai, which is a small town around Mumbai. My practice started with the classical method. I've been learning the sensation method. I've been learning all the other methods, Kolkata methods. Somehow the journey was always, इधर से इधर ये करो वो करो. But I was not getting results with PCOS cases.
and I was disheartened, disillusioned. Why am I not getting PCOS ka cure? Most of the cases. And that's how during the lockdown, I happened to see few videos of mind method practitioners. Maybe 10-12 साल पहले I had come across few practitioners, but वो समय नहीं था कि I could join. लॉकडाउन में बहुत समय मिला. I read a lot of good books, ROH के books देखे, came across these videos of beautiful women, all of you over here, and was really impressed. And I started to practice in the mind method with limited knowledge. And the first, my case, which I got a very good result, was an infertility case. I had presented this case, pulsatilla. And with very few sperm count in that male whom I had prescribed pulsatilla for undescended testes. One testy was undescended. I got beautiful results. After that, there was no stopping back. So I thought, no, if mind method is giving me results in this particular arena, then there is too much to it and I must dwell deeper. And now in this 2, 3, 4 years, I have been studying. I'm a learner, I'm studying. But at the same time, I really, I'm happy with the practice that I'm doing compared to what I was doing before. So this is my journey. Let me now ask other homeopathic doctors to share their journey or what they can contribute to the mind method. So Dr. Tanzila, since you are there, can I ask you to share your journey or any contribution that you want to tell us? Namaste. Welcome, ma'am. Good evening, everyone. Good evening. Yes, thank you so much. Thanks, Dr. Ashok, and thanks, Dr. Smita Nayak, and thanks, everyone. And happy Women's Day to every homeopathic doctor which present there and not present there. I got the practice in 2000. In 2000, I was starting sitting with my husband because he was doctor, and I started my course. And मैंने अपने स्टार्ट में सीखा और मैंने देखा कि होम्योपैथी में क्योर है, एलोपैथिक में मैंने क्योर नहीं देखा. लाइक मास्टर हनीमैन का भी यही एक्सपीरियंस था. तो स्टार्ट में मुझे जब सीखने को मिला तो मैंने इसमें बहुत सारे केसेस को क्योर होते हुए देखा. आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड कि ये कुछ है, ड्रॉप्स में कुछ तो है जो ट्रीट करता है. आई वॉज इंटरेस्टेड और मैंने अपना स्टडी शुरू किया. तो जब मैं माइंड मेथड पे आई तो मुझे और भी इम्प्रेस हुई कि ये कुछ और भी खास है. तो स्टार्ट में ही पहली तो गुड लक ये कि डॉक्टर अशोक साहब से मेरी बात चली और मैंने यहाँ बहुत सारे ग्रुप्स में भी देखा, सीखा भी. और मैं बहुत थैंक्स करती हूँ तमाम मेंटोर्स का. आज की ख़वातीन अगर हैं तो वो इन लोगों की निगरानी में सीख रही हैं. मेरे पास जो फर्स्ट केस आया था वो जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था एज अ होल पाकिस्तान में भी, स्पीकिंग में भी, जिसको डॉक्टर्स ने पूरी तरह से एक जवाब दे दिया था कि जी ये नहीं ठीक हो सकता. यानी वो डिसपॉइंट हो चुके थे वो लोग. इतनी सारी फाइलें और इतना सब कुछ. वो केस अभी भी हिस्ट्री में, सोशल मीडिया पर और तमाम ग्रुप्स में पड़ा भी हुआ है. मैंने शेयर भी किया था विद वीडियो एंड ऑडियोस. वो टेंटम सिंड्रोम, टोरेटी सिंड्रोम का केस था. और उसमें पेशेंट जो है पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी थी, चारपाई पर पड़ी हुई थी और वो एक आवाज देने की हद तक थी. तो वो ना तो कुछ खाने का बता सकती थी ना कुछ. और घर वालों ने 2 मकान, गाड़ियां, सब कुछ बेच दिया था. और इस वक्त वो सिर्फ एक मेरे पास बहुत एक आस लेकर आए थे कि हमारी बच्ची के मुंह में से खाना अंदर चला जाए और किसी तरीके ये कुछ मैनेज हो जाए कि इसकी आवाज बंद हो जाए. ये इतना चीखती है कि पेरेंट्स भी बीमार हो चुके हैं. नींद की गोलियां बराबर उनको भी देनी पड़ती हैं, इसको भी देनी पड़ती हैं और कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता हमें कि नींद की गोलियों के सिवा.
और वो रात को भी इतनी ऊंची सी आवाज देती थी और वो चुप नहीं करती थी। लेकिन इसका सॉल्यूशन एलोपैथिक डॉक्टर के पास भी नहीं था। केस वाज सप्रेस्ड बैडली, डे बाय डे सप्रेस्ड होता गया और इस वक्त इस सिचुएशन में चला गया। अब मेरे पास जब फर्स्ट टाइम आई तो आई वाज रियली कंफ्यूज्ड कि मैं इसे कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो चूंकि फिलॉसफी के में जो चीजें हमने पढ़ी हुई थी तो उन पर यकीन करते हुए मैंने केस लिया। आई वाज सेलेक्ट द टोटलिटी और उसमें मैंने जो टोरेटी का जो रूब्रिक लिया था वो मुझे बहुत करीब ले गया। रेपिटेटिव बिहेवियर भी था उसमें और जो वॉइस का नॉइस था उसमें, वो स्ट्रामोनियम सेलेक्ट होने के बाद विद इन 2 वीक्स वो लड़की ने खुद से बैठ के खाना शुरू किया और सब लोगों को लगा कि ये तो कोई मैजिक है, ये इन्होंने दवाई में क्या डाला। बहुत से लोगों ने पूछा आपने दवाई में क्या ऐसा डाला। तो वो बच्ची अभी भी माशाल्लाह से ठीक ठाक है। अभी भी वो अपने भाई के साथ होटलिंग का खाना बनाती है और वो लोग अभी भी मतलब बहुत थैंकफुल है मेरे। और इसी वजह से ज्यादा मेरी जो होम्योपैथी में हुई, ये एक केस नहीं, अलॉट ऑफ केसेस हैं लेकिन उनमें से एक ये बहुत मखसूस स्पेशल केस था। तो इसने मुझे बहुत, और माइंड मेथड के हिसाब से अगर मैं इसको क्लासिकल के हिसाब से देखती तो मुझे शायद वो रूब्रिक्स ना मिलती या उस तरह से। तो माइंड मेथड ने मुझे बहुत बहुत फायदा दिया। अ लॉट ऑफ केसेस ऐसे हैं जिनको एलोपैथिक सिस्टम ने फेल करार दे दिया था, जो केसेस होम्योपैथी ने और माइंड मेथड की मदद से सॉल्व हो गए, लाइक फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस से और शीप ड्राइविंग एकोनाइट से और भी बहुत सारी ऐसी रूब्रिक्स मैं आपको बता सकती हूँ जिनसे मैंने बड़े बड़े केसेस को सॉल्व किया। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Tanzila madam. Yes. So, very nice. Can you hear me? अच्छा, यस, मुझे एको आ रहा है मेरा ये आवाज। Okay, can you hear me? Now it's okay. Yeah. So, such a wonderful contribution. They say magic of homeopathy, magic of the mind method, but I say magic to hai hi, but it is a science. Only thing is somewhere we are not able to convince people into believing that these things happen. So we will have to, in the coming years, be ready with the explanations and the research work कि हम prove कर सके that why stramonium acted in this girl or why pulsilla acted in my case, and then we could cure the patient. So with this beautiful start of the session, I again welcome one more homeopathic doctor over here. Okay, Raksha madam does not require Dr. Raksha Thakkar. Hello. Dr. Raksha. Namaste ma'am. Hello, Good Dr. evening. Smita. Yes. So you Thank don't you so require any introduction. much. Happy Women's Day to you. Raksha madam has been Dr. Ashok sir's Humsafar, Humsathi when they started HSH. And I had seen the old messages of Telegram when I was going through them. And I saw the kind of contribution she did in starting HSH. We are really thankful to you, Raksha ma'am. And whenever I see you in all the other groups also, Just a second. It is like teamwork, so I would not be taking the entire credit about it. So it is all teamwork, and I owe it all to Dr. Samuel Henneman, sir. It's his blessings that the group is running so smoothly, and I am truly happy and grateful that the seed which we had sown, it is yielding such good results. Thank you so much. Yes. And basically, it was like he just messaged me, Dr. Awadya, and he said, Didi, we need to talk on 5 to 10 minutes. The thing is, like, for me, 5 to 10 minutes is too less.
I would say, because there are tons and tons of memories which we cherish and we would like to share. Okay, and first of all, I like the poem, the Nari poem Thank which you. you have written. It is very nice. Thank you. And it is like concoction of emotions, the sentiments which are involved in that poem. So today I dedicate this day to my mother, Mrs. Meena Thakkar, and to my daughter Navya. So Meena Thakkar Trust we handle, and it conducts various seminars, various camps as well. So all the best to the team. In regards to the theme of today's session, it's like your stories of resilience and triumph. Okay. So what was the spark? There always has to be that spark which is ignited within us. That is the reason why there is, I would say, the turning point. The turning point in homeopathy. Okay. So what was my turning point in homeopathy? So naturally, we were allopathic inclined first. So when we were taking admission into homeopathy, Poddar College at Worli, my dad said, see what all others are taking. You also just check out first. I said, fine, but I won't be taking Ayurvedic because it has Sanskrit and I'm not well versed with Sanskrit. So homeopathy. Okay, so that was basically the turning point which my father had advised, and I went into it. But the entire graduation, that BHMS, and then I have done CCH course, certificate course in advanced homeopathy. So after my BHMS course, I finished with my internship, and then I thought of taking clinical experience under my mentor. Okay, so then when I first entered his clinic, OPD, the thing he told me was, ma'am, this is the pathy which deals with feelings and emotions of the patient. Then I said, that was the time, that eureka moment, I would say, for me. And if you got to read Stuart Close's book, no, that is a psychological viewpoint. Psychological viewpoint of case taking is when it clicks. Huh. Now this is where I got the entry to the case. That is your eureka moment, the psychological viewpoint. So that was like a eureka psychological viewpoint moment for me when he said, this is the pathy which deals with feelings and emotions of the patient. If we go to an allopath, even to a psychiatrist or a psychologist, the depth with homeopathic case is taken, even that is not dealt with a psychiatrist and a psychologist as well. This is the depth. And as each and every case unfolds, we get a new learning through each and every case. So it so happened that since you are well aware that this team was formed, okay, and we were sharing our cases, and I've already shared that case. I will again share it in the group so that it will be a revision also to everybody. So it so happened that it was a case of, I'll tell you the remedy as well. So sepia and indifference. Okay. So the remedy was prescribed, and then the patient cried. Okay. I said, nahi, strong banne ka, rone ka nahi. Huh? And then we have Dr. Supreet Maini from Aurangabad. Okay. She told me, अरे रोने देने का ना patient को, रोने देने का. बोले दीदी, she needs to be strong. No? I call her Didi, and I have also been given name of ma'am, Didi, Behen, sister. Okay, so I call her Didi. So then I said, अरे but we need to be strong. नहीं रक्षा, उसे रोने देने का ना. She needs to vent out. So that was also a striking moment. Then let the patient vent out. When the patient is venting out, then you must not say strong. Yes, they need to stay strong. And as we celebrate today Women's Day and women empowerment also, but when comes to emotions, let the patient vent out. Okay, so this is what I learned. Then this is like resilience. Now I silently have to go through the case again. That is a retrospective study, and with the emotions which are involved within. Okay, so
I will share even the chart, okay, the communication chart. Only 7% weightage is given to verbal communication, 38 is the body language, and 56 is the tone. But I have seen in groups that 7% weightage of the verbal communication is given more. And directly, the repertorial chart is being shared. We need to first analyze, evaluate. So whenever I share a case, I first tell them, you first understand the patient. I am not even concerned about the remedy and the rubric first. First, you understand the patient, analyze, evaluate, then comes the rubric repertorial chart, the potency, the posology, the management. This is the step-by-step understanding. But the thing is, directly, if you post the repertorial chart and they say, नाट्रम्यूर का फील लगा, सीपिया का फील लगा, वो आपको लगा है, हमें कैसे समझे आपका फील? So, say I even give an example of, I say that a person loves other person. Okay, so how to feel the intensity and the depth? The intensity of the depth, like say it is सागर से गहरा है प्यार हमारा. Can you measure how much? Okay, like say Dr. Raksha like love Dr. Smita. How much? You will say, ma'am, how much you love me? Is there any measure to it? You need to feel the depth. Okay, you have understood. Feel से मुझे natremur लगा, feel से सिपिया लगा. But how am I to comprehend that? Dr. Smita को feel से natremur लगा. But Dr. Raksha को कैसे समझे? So I then tell them, okay, cite reasons for why you feel. Repertorial chart, okay, don't. But there are reasons from materia medica, okay? And if you want to be rest assured that your clinical symptoms are correct, we usually tend to forget this stalwart work. कौन पढ़े? इतनी मोटी मोटी किताबें कौन पढ़े? वन्नू. They are gems imbibed. Even organon, if a question is asked to a student that which is the subject, then they say no, organon, it is philosophy. And due to sophisticated vocabulary, they feel that organon हमारे बस की बात नहीं. So we need to refer to the dictionary as well. No doubt, master's English, and he was a Christian after all. So his English and sophisticated ones. So we need to refer to the dictionary, fine. But there are golden gems imbibed in it. And this is written in Bonnie Guston's lesser writing. Golden gems. And he says this sentence has to be underlined. Many don't possess it in the book. Many don't even possess the book. Okay. So, and I have even co-authored 2 books. So one is Road Taking, the Turning Point, where I have mentioned this also. So what was the turning point in my life? It was like non-homeopathy book. It is co-authored by me and many other authors. So they were saying, what is the turning point of your life? This is what I had said. Now comes the best wishes to the team, and I will not take much of your time because there are many people who are eager to share their experiences, and I am here to learn from them as well. So together we learn, we share, we evolve. And if I got to take the list of each and every member, it is like the list is non-ending. Okay, so it goes on, and I would say each member here is important for us because it's like the torch bearers. They are the candle who lit and keep the spark alive. This is one commitment we want from you all. Keep the spark alive, and each and every member here are the torch bearers who will be running this group further. It will be like we have to carry the legacy further. Okay? आज हेनीमैन सर नहीं है, हमारे दिल में जरूर है, और उनकी ही लीगेसी चलती आई है. कल रक्षा मैम रेस्ट इन पीस,
Okay, but then the legacy should go on. Okay, so it's after generations, this legacy should not stop at any cost. There was a time when we even thought of dissolving this group because of less participants. But then we thought, no, some of the other days, this group will be beneficial to many, and for many days we had kept it like as it is. Okay, then it was like people joined in, and again this spark was ignited. So this spark, Dr. Smita and the team and everybody, please, a commitment and today a promise on Women's Day that the spark will be kept alive. Plus, one another promise, we take a vow of reading Organon as well, because many people are drifting from their roots. So to get back to the roots, again we need to read Organon. Don't think it is philosophical. Even the practical implementation, if you want, we can share in the group. Okay, so the practical implementation also, it is not at all philosophy. He has written his experiences, his experiments. He said experiments means after giving the remedy, no? After prescribing, and then we analyze, we evaluate. Now, what is the next step further? That he calls, Dr. Henneman sir says, as experiment, because then comes the conclusion. No, even in science we had experiment, like observation and then the conclusion. So similarly, observe and conclude, and each and every word written in Organon holds prime importance. It is like, yes, the sophisticated is vocabulary, but we need to comprehend. And that is his experience. It is 6 books. 6 books he has written, and his experiences, and 12 years of exhaustive study on chronic disease. Why? Why was the need of this? Because he was getting relapse in acute case. So it is not just writing of the book, it is the experiences which he had, and each and every, and there were so many corrections, so many additions at each and every step. So wishing the team all the very best, not taking much of your time. Okay, so we move on further. Thank you so much. Wishing everybody all the very best. Thank you, Raksha ma'am. Thank you so much. My pleasure, dear. And Avadhya sir, इस candle को जो the light, igniting light, you have to carry it forward, the legacy. ठीक है? God bless you all. आपने जलाई है, शुरुआत आपने की थी. Thank you. वही मैंने डॉक्टर स्मिता से कहा कि समझो शुरुआत मैंने की है. I cannot take the entire credit of this. The reason is we are a team first, and each and every member, जब समझो इनपुट रक्षा दीदी ने दिया, एक इनपुट अशोक अवधिया सर ने दिया, एक इनपुट डॉक्टर स्मिता, तो वो जो कैंडल की जो जोत है ना, वो जलती आई ऐसा. तो जोत से जोत जगाते चलो. तो दिस इज द थिंग. तो एक रक्षा दीदी का स्टार्टिंग कंट्रीब्यूशन, लेकिन उस जोत, उस दिए को जलाने का कंट्रीब्यूशन भी तो है ना लोगों का, सभी मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन है ऐसा. तो one person cannot take the credit of the entire group. It is the legacy, as I said, and we need to see that we will carry on the legacy further. Okay, Master Dr. Samuel Henneman sir, in your remembrance, Dr. Ashok Avadhya, you have that smile on your face. That Nidhi will always remember Master. Yes, Master Samuel Henneman sir, thanks for bestowing the gift of dynamic homeopathy to us all. And Avadhya sir, keep that smile always. Okay, and आपके माता जी का भी ख्याल रखना. ठीक है? Thank you so much. Take care. Bye. Thank you, Raksha ma'am. Thank you for your pearls. Thank you for the wisdom that you shared. And truly said, Organon is our base. And Anu Kaushal ma'am had recently
reminded us again कि सिर्फ टेलीग्राम करके मत बैठो, don't study only from Telegram. Let it be like a guide, but every day read at least 10 to 15 pages of other books, source books, organon, And one thing I repertory, want to material. add, Dr. Smita, that we need to read the Yeah. preface of every book. Preface. The reason Yes. is whatever author has mentioned in the entire book, that concise thing it is mentioned in preface. I Yes. don't know whether I'm Yes. taking much of your time. Just a few lines. This preface of Philip Bailey, if you read, no? Then he asks his patient, what is it that you want to change in your personality? What is it that you want to Okay. change in? So this gets to the direct core heart of the patient. To understand the will of the patient, that how much the patient himself actually want to change in their personality, and that gets to the crux core of the thing. And this is what we want. We want to reach to the crux core, isn't it? So he asks, what Yes. is it that you want to change in your personality, and Change. thereby get it to the crux core. So reading preface of each and every book is also important. Okay. Thank you so much. Yes. Gratitude. Thank you, Raksha ma'am. Thank you. Wish you all the So, best. I want, thank you. I want to tell all of you that we have also a group called Swadhyay, wherein we do study every week. Most of the time we try to squeeze in, and there we read the preface, there we read something extra apart from what we, normally learn. And we try to share. The team tries to share whatever I know, whatever somebody else knows, and then we kind of, come to a conclusion. So this is a very good exercise we've started since few months, and I think that will really help in our growth. Thank you, Raksha ma'am. Very nice initiative. So now, all the very best to you. Thank you, ma'am. Thank you so much. And keep sharing, keep guiding us. Sure. As Okay. and when I get time and time permits, definitely I'll say. Thank you. Thank you Bye. so much. Thank you. So now I want to invite other women homeopaths who are really with us. So, Sweta Agrawal, ma'am, are you okay to share? Yes, ma'am. Hello? Hello. Yes? Yeah, Hello. Sweta, ma'am. Yes, ma'am. Good Thank you, evening, ma'am. Sweta, ma'am. Good See, evening. we are a team of people who are always open up with our cases. We share, we try to explain to students or new learners. So Sweta ma'am is one such mentor, a learner, a friend whom I have seen. She tries to explain very nicely about why she has taken a particular rubric and what made her come to a remedy. So I would really like to know from her, how did she start her journey and what was the turning point, as Dr. Raksha said. Please welcome Sweta ma'am. थैंक यू सो मच मैम इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और सबसे पहले सबको हैप्पी वुमेन्स डे। मैंने अभी ग्रुप पे नजर की तो जितनी फीमेल्स है इतने ही मेल्स है, एंड दिस इज अ बिग डिफरेंस आई फील कि अब वो जमाना नहीं रहा कि हम नारी को कमजोर वगैरह समझते थे कि उस पर, बट वी आर नाउ इक्वल। हस्बैंड भी जो है दे आर लाइक फ्रेंड, जैसे आपने बोला ना, ही इज नॉट पति परमेश्वर, वो बिल्कुल फ्रेंड की तरह हैं, वो हमें समझते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं हर जगह पे। तो लाइफ इज चेंज। और अगर होम्योपैथी की बात करूं तो मेरी जर्नी ऐसी थी कि लाइक शादी के बाद एलोपैथी प्रैक्टिस की नहीं की, फिर बीच में गैप्स आए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फिर छूट गया, फिर किया, फिर छूट गया। और टर्निंग पॉइंट डेफिनेटली लॉकडाउन था, क्योंकि उससे पहले होम्योपैथी कर रही थी बट फिजिकल पे था तो इतना मजा नहीं आ रहा था। कभी कभी लगता था कि यार क्या है, सब कुछ करने के बाद भी नहीं हो रहा है केस सॉल्व। और माइंड मेथड में आने के बाद एक सोचने का तरीका भी बदल गया। माइंड मेथड से हमने अपने पेशेंट्स को ही नहीं ठीक किया, अपनी लाइफ में भी बहुत चेंज आ गया, क्योंकि हमें पता चलने लगा ना कि हमारी सोच हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए इम्पैक्ट करती है। तो जीने का तरीका ही, जैसे कहो ना कि माइंड मेथड ने बदल दिया बिल्कुल। तो मेरा भी लॉकडाउन से ही स्टार्ट हुआ है।
और सीख रहे हैं, आप लोगों से सबसे सीख रहे हैं। और अशोक सर का सीरियसली थैंक यू कहूँगी कि उन्होंने ये ग्रुप बनाया, इतना सपोर्ट किया, और सब फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं, सब लोगों से सीख रही हूँ। सबका थैंक यू एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। थैंक यू श्वेता मैम। एक डिफरेंस मैंने यहाँ पे मुंबई में देखा है, जो माइंड मेथड प्रैक्टिशनर्स है कंपेयर्ड टू अदर प्रैक्टिशनर्स। दिस इज अ वेरी पर्सनल थिंग दैट आई हैव सीन कि जब हम प्रैक्टिस में अकेले होते हैं, क्लिनिक में अकेले होते हैं, और इफ यू आर नॉट you are stuck in a case, you don't get some things, the finer differentiation. तो जो माइंड मेथड प्रैक्टिशनर्स है, दे आर सो ओपन टू डिस्कस, सो ओपन टू हेल्प, सो ओपन टू कम्युनिकेट, not just from your friends or anybody, but this is what I've seen in the mind method practice. Everybody becomes a friend and they are more closer. Today, even if I don't know all the practitioners in this group, but I'm very sure if I want any help, I can call up, discuss, and talk to all the other practitioners. So this is one big difference between the mind method practitioners and the other homeopaths also. So let me just go ahead and invite other homeopathic doctors who are ready to share their journey with us. So is Nilofar ma'am over here? Yogita ma'am, Nilofar ma'am hai kya? Yeah, I'm present. Hi, hello Nilofar ma'am. Nilofar ma'am is one. Yeah. So Nilofar ma'am is one. Hi, happy Women's Day. You are like a teacher, but at the same time, somebody whom we feel apne jaise, we can really talk to you, we can ask you, we learn from you during our Adhyayan sessions, and looking at your cases really makes us think, oh, why did she take this, why did she you make the rubrics by understanding the patient and not just going by the rubric. I'm really impressed and really feel honored to be talking to you today. Please share your journey, ma'am. Thank you for such inspiring and such the words of appreciation, and a very happy Women's Day to each and every female and all the males who support, and सभी group को, because कैसे जब तक we don't work in companionship, ये सब बहुत मुश्किल है। और मेरा भी जैसे हम सब बोल रहे हैं, एवरीवन इज स्पीकिंग कि हमारा कैसे जर्नी स्टार्ट हुआ, और हाउ वी वर लाइक फिजिकल्स पे प्रैक्टिस करते थे। लाइक 10 years ऑफ माय इनिशियल प्रैक्टिस वाज ऑन फिजिकल्स, बट इन 2018 जब एक HHF का सेमिनार मैंने अटेंड किया, तो उसके बाद आई वाज लाइक अरे स्ट्रैम दे दिया एक पेशेंट को, एंड विद इन 10 to 15 seconds द माइग्रेन उस पेशेंट का गायब हो गया। और शी वॉज सो कूल एंड शी वॉज टेलिंग मुझे हल्का लग रहा है ऐसे, तो आई वॉज सो इम्प्रेस्ड विद दिस सिस्टम, सो आई थॉट ऑफ स्टडिंग। सो आई पुट इन लॉट ऑफ, मतलब ईच एंड एवरीवन डज दिस, बट देन आई वॉज लाइक कि ये करना है, इसको सीखना है, तो आई वॉज बिहाइंड इट। डे इन डे आउट आई वॉज लाइक बुक्स रीडिंग करो, जो भी मटेरियल मिल रहा है, कहीं से भी केसेस मिल रहे। एट दैट टाइम ऑल दिस ग्रुप्स वर नॉट सो मच फ्लरिश्ड और नॉट मीन्स स्टार्टेड येट, मीन्स पता नहीं था हमको इतना। तो फिर हमने कैसे, आई स्टार्टेड इनिशियली विद ऑर्डर्स एपेरी एंड सब बुक्स जो भी मिलते थे, और हम वी यूज्ड टू डिस्कस, वी यूज्ड टू हैव ऑफलाइन सेशंस। उसके बाद लॉकडाउन आ गया, तो इनिशियली बेलाडोना, स्ट्रैम, लैकेसिस वाज आल्सो लाइक अरे कार्सिनोसिन कैसे दे सकते हैं किसी को, हम कार्सी कैसे दे सकते, इट वाज लाइक कैसे, हाउ कैन वी यूज दिस मेडिसिन। तो वो एक था पहले दिमाग में। तो आफ्टर प्रैक्टिसिंग और आफ्टर नोइंग द माइंड मेथड, ये सब चीजें आसान होने लगी। मतलब पहले आफ्टर रीडिंग अ केस, या कोई पेशेंट कोई क्रिटिकल कंडीशन पैथोलॉजी के साथ आता था, या कुछ इन्वेस्टिगेशंस में सम हाई मार्क्ड कोई डिजीज है, तो वी यूज्ड टू बी लाइक अरे ये हमसे तो नहीं हो सकता है, मीन्स एक अपने दिमाग में वो स्टिग्मा था कि वी कुड नॉट डू। बट नाउ द थिंग इज दैट कि नाउ
ऐसे लगता है कि चलो मीन्स फर्स्ट एपिलेप्सी केस व्हेन आई हैड, तो इट वाज लाइक आई वांटेड टू गिव अ ट्राई, बिकॉज उन्होंने हर एलोपैथ ने होप्स छोड़ दिया था. दे हैड टोल्ड कि उस बच्चे को ले जाओ, इसका कुछ नहीं हो सकता है, लेट हिम सर्वाइव, कितना होगा वो ऐसे ही रहेगा. तो द वेरी फर्स्ट डे आई हैड गिवन हिम मेडिसिन. शाम में वो बच्चा आफ्टर 2 to 3 लूज मोशंस ही स्लेप्ट वेरी पीसफुली. तो आई गेंड कॉन्फिडेंस कि चलो कुछ हो सकता है इसमें. तो उसके बाद आई वाज लाइक नाउ नो टर्निंग बैक, अब करना है तो वी कैन टेक रिस्क, हम कर सकते हैं. मीन्स इफ वी कैन गिव some relief to a ailing heart or ailing body, तो उससे ज्यादा सुकून कहीं नहीं है, उससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं है. मॉनिटरीली वी आर इन दिस प्रोफेशन, पैसा तो है, बट द थिंग व्हेन द पेशेंट कम्स एंड सेज कि अरे आपकी दवाई खाई और मुझे इतनी अच्छी नींद लगी, मुझे इतना फ्रेश लगा, तो दिस थिंग्स give us so much of satisfaction. तो वहां से I started कि no, we have to put in more and more efforts. तो हम पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो utilize whatever we can. And now the thing is that after 4 to 5 years of practice, अब थोड़ा confidence है कि we share, हमारे भी cases फेल रहते, कहीं पे stuck up होते, तो वी शेयर. जैसे स्मिता मैम आपने अभी बोला कि वी लाइक इन माइंड मेथड इतना ओपननेस है कि इफ वी ट्राई टू शेयर एनीथिंग वेयर वी आर स्टक इन, तो एवरीवन विल ट्राई टू हेल्प. मतलब ऐसे नहीं है कि अरे हमको टाइम नहीं है या तू खुद देख ले. तो हमारा भी एक यहाँ पे ऑफलाइन ग्रुप है जहाँ महाडिक सर, हम सब, मीना मैम, हम सब लोग डिस्कस करते हैं ऑफलाइन सेशंस में. वी मीट एवरी थर्सडेज, तो वी डिस्कस विद आवर अनसॉल्व्ड केसेस एंड वी गेट सम वे आउट. मतलब जहाँ पे हम स्टक अप हुए हैं या समवेयर वी फेल टू गेट समथिंग्स इम्पोर्टेंट. तो ये और HSH में भी मेरा बिगिनिंग ऐसे ही हुआ कि महाडिक सर यूज्ड टू प्रेजेंट केसेस ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो ही शेयर्ड हिज वीडियो ऑफ लैकेसिस. तो आई वाज सो इम्प्रेस्ड. तो उन्होंने पूछा कि आप करोगे क्या, तो मैंने बोला सर आई एम नॉट सो वेल प्रिपेयर्ड फॉर प्रेजेंटेशंस, मींस आई कैन टॉक बट आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड. सो ही टोल्ड अरे कर ले, कुछ नहीं रहता है. सो आई वाज लाइक ओके डन, I'll share a case. So after that I was like I started shared a case of belladonna. और वो इतना जस्ट आई टुक इट सो लाइटली कि सर ने VC स्टार्ट किया, आई शेयर्ड अ केस, एंड आफ्टर दैट इट वाज लाइक सो इंटरेस्टिंग कि चलो आई कैन हेल्प समवन गेन समथिंग, या आई कैन शेयर माय इनसाइट्स टू समवन. तो दैट वाज सो नाइस. सो आई पुट इन के करना है अभी इसके आगे. तो एट प्रेजेंट मीन्स लाइक 2 to 3 days back I had a case of adenoids, और द बेब मीन्स द गर्ल 6 to 7 years गर्ल, और उसके मम्मा की अब डिलीवरी हो चुकी है, सेकेंड बेबी मीन्स शी हैज अ न्यू बेबी. तो ये दिस गर्ल गॉट एडेनॉइड्स. तो शी वाज ट्रीटेड बिफोर, मेरे पास उसके स्किन एलिमेंट्स के लिए ट्रीट हो चुकी है. तो आई रिपीटेड द डोज, बट उसको ठीक नहीं लग रहा था. तो 2 to 3 days शी वाज लाइक नो मीन्स लॉट ऑफ डिस्चार्जेस, नोज से डिस्चार्ज हो रहे, उसको स्वेलिंग डिफिकल्ट है. तो माय हस्बैंड सजेस्टेड कि CBC करा लो. तो WBC थोड़ा रेज्ड निकला, बट अदर ऑल फाइंडिंग्स वर नॉर्मल. तो he told his the girl's father कि start with antibiotics. तो the father has so much faith in me, he called me कि सर ऐसे बोल रहे. तो मैंने बोला नहीं रुको, मत करो, आज 2 दिन मत करो. तो he was like okay, आप बोल रहे तो मैं नहीं कर रहा हूँ. ऐसे भी मैं नहीं करने वाला था, बट he is a good friend, so he told कि नहीं, उन्होंने दे दिया. मैंने बोला रखो मेडिसिन, मत दो उसको. तो now we have that confidence that we can tell कि नहीं देना है, अभी एंटीबायोटिक्स नहीं देना है. let her went out, let her open up, उसका निकलने दो. मीन्स she is feeling like मम्मा को निग्लेक्शन फील हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो whatever. तो I gave her a medicine and she was not eating since last 1 week, but उन्होंने कॉल किया कि the girl is fine, आज खाना खाया उसने, थोड़ा ओपन अप, आवाज नहीं निकल रही थी तो आवाज निकल रही. तो he was happy. So this things happen कि when we have that confidence, then we can impart. हम बोल सकते कि नहीं मत करो या करो. अब हम ही कंफ्यूजन में रहेंगे या बोलेंगे नहीं हमसे नहीं हो रहा, आप कहीं और जाओ. Well, many times we see कि we try with cases and we said कि नहीं आप जाओ, कोई एलोपैथ के पास से ले लो. तो what's the use of this? ना try or else discuss. You if you can't get anything, तो group discussions करो, go on studying. You self study, you introspect the case. आप खुद को introspect करो कि आप कहाँ फेल हो रहे हो. Try on your own, because
एवरीथिंग इज नॉट इजी प्लेटर सर्व्ड, आपको मेहनत तो करना है, कोशिश तो करना है। तो मेरा ऐसे ही रहता है कि वेन एवर यू गेट समथिंग न्यू, just don't take it as a burden or don't take it as a task to be completed. Just take it something which you have to enjoy while going through the process and you have to give relief. तो बस मेरी तरफ से इतना ही है कि जो भी करो जान से करो, दिल लगा के करो, तो सक्सेस वॉन्ट टर्न बैक, मतलब हमको मिलना ही है फिर उसमें से, वी हैव टू सक्सीड इन दैट थिंग। सो वॉट एवर यू डू इट विथ योर होल हार्ट एंड ट्राई योर बेस्ट। when anything fails, anything gets stuck up, तो हम लोग है ही एक दूसरे के लिए। एंड HSH से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला where I could share my cases, कॉन्फिडेंस मिला। अशोक सर बार बार मोटिवेट करते रहते हैं कि दी आप कर लो, एक सेशन ले लो, फ्राइडे फ्रेग्रेंस का है, आप कर लो। तो दैट थिंग मोटिवेट्स, मतलब करना है तो चलो प्रेजेंटेशन के लिए हमारी पढ़ाई और अच्छे से हो जाती है। मतलब कोई केस है जिसको हमने क्या है, ठीक है, बट वाइल प्रेजेंटिंग इट बिकम्स कंफर्म्ड कि उसके रेट्रो रूब्रिक्स या उस केस से रिलेटेड जो कुछ मटेरियल हमने आज तक नहीं सोचा था या उस बारे में हमारे दिमाग में भी नहीं आया होगा, बट वाइल शेयरिंग इट वो हमारे नॉलेज में भी हम डाल सकते, मतलब वी कैन इम्प्रूव आवर नॉलेज बाय शेयरिंग। सो शेयरिंग इज ऑलवेज अ गुड टूल टू इम्प्रूव आवर ओन सेल्स. So everyone keep sharing, and once again a very happy Women's Day to each and everyone. Bye. Thank you so much, Nilofar ma'am. Thank you for your kind words. I am really so impressed by all the mentors over here who have not just described their journey, but also, they are so humble and they are ready to share. Homeopathy is not easy. Mind method is also not easy. You need to learn, you need to give your time, and you are a learner throughout the life. So I will not find a single person saying that studies ho gaya, yeah, now I can just practice. Every homeopath keeps on learning, and that learning makes the homeopath eager. मैं ना जब भी when I meet general practitioners or I meet allopaths, after say 30 years of practice, after 25 years of practice, they get bored. बोर्डम आ गया, वही कर करके बोर हो गया। लेकिन आई हैव येट टू सी एनी होम्योपैथ 30 years of practice के बाद बोले कि मैं तो बोर हो गई या मैं तो बोर हो गया। Everybody has got something else to learn about the same lachesis है, same belladonna है, same stramonium है, but you get to learn more and more. So all you learners must keep learning, must study, and like Nilofar ma'am, like Raksha ma'am said, that keep studying. So one more gem from our presenters today. योगिता मैम कौन है? नमिता खटाना मैम है क्या? नमिता, डॉक्टर नमिता खटाना मैम, इज शी देयर? अभी आई थी वो, लेकिन अभी अचानक वो डॉक्टर सोनल है। डॉक्टर सोनल है? हाँ, okay. Dr. Sonal Yadav ma'am, welcome to this forum, welcome to our sharing, and let us know how this journey with HSH or how this journey with the mind method is for you. Please welcome Dr. Sonal Yadav. Hello, good evening all of you. Good evening. बेटा Happy Women's Day all of you. Yes, you too. एक्चुअली मेरी जर्नी मैम, मेरी भी जर्नी HHF से स्टार्ट हुई। जस्ट मैंने 2022 से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। इसके पहले तो मैंने होम्योपैथी, मुझे कुछ भी नहीं आती थी। तो जस्ट मैंने ऐसे क्योंकि मुझे ये लगता था अरे यार कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से इंटर करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो 3 नाइस मैन के वीडियो वगैरह सुना मैंने। फिर उसके बाद मैंने HHF में मैं कैसे ज्वाइन हुई मुझे नहीं पता, बट मेरी बहुत ही अच्छी जर्नी स्टार्ट हुई कि आज मैंने अंडरस्टैंडिंग भी मेरी इतनी अच्छी हुई इस ग्रुप से। सभी मेंटर्स बहुत अच्छे हैं और मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहती हूँ अशोक सर को। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, जब भी मैं कुछ भी मुझे नहीं समझ में आता, सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो सर बहुत अच्छे से समझाते हैं। और इसके पहले भी मैंने एक केस भी ग्रुप में प्रेजेंट किया था, तो सर ने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि दीदी आप कर सकते हो।
तो मेरा भी वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे लग रहा था कि मैं कैसे करूंगी, लेकिन सर ने बहुत अप्रिसिएट किया, नहीं नहीं ठीक है, सब लोग हेल्प करेंगे, आप करो। तो मैंने प्रेजेंट किया और बेसिक कोर्स एक्चुअली मैंने ज्वाइन किया था स्टार्टिंग से, तो वहाँ से ही मुझे रूब्रिक्स की अंडरस्टैंडिंग हुई कि रूब्रिक्स को समझना कैसे है। से अनु मैम है, नीलम अवतार मैम के वीडियोस वगैरह सुन के, और क्लासेस में रेशमा मैम की क्लासेस अटेंड किया, नीलोफर मैम से, और तो सभी मेंटर्स से ऐसे थोड़ा थोड़ा सीख के फिर एक जर्नी स्टार्ट हुई कि वो कॉन्फिडेंट आया, नहीं यार अभी कर सकते हैं। से मैंने कुछ अपने घर में बच्चों को भी देना शुरू किया, मैंने मेडिसिन अपनी मदर को भी दिया, तो सब लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ योगिता मैम को, हुसैन सर को, वो सब मेरी जर्नी में बहुत हेल्प किए हैं। योगिता मैम भी बहुत अच्छे से, कुछ भी रहता है अरे मैम मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे कहाँ से मैं क्या करूँ, बहुत अच्छे से वो समझाती हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और ये छोटी सी मेरी एक जर्नी है मैम, कि मैंने अपनी क्लिनिक भी स्टार्ट किया और मैं पेशेंट भी देख रही हूँ और रिजल्ट भी अच्छे हैं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर सोनल। देखो बैकग्राउंड में जब भी डॉक्टर्स बात करते हैं, यू कैन फाइंड देयर आर चिल्ड्रन, देयर आर इन लॉज, देयर आर कुकिंग, देयर आर किचन वर्क। मतलब वी हैव टू स्ट्रगल not just with our learnings but also with everything going on. That is one challenging task which we do, you know, all we women homeopaths, all homeopaths are good, but we women have to look after, you know, aaj bacche ka, I have my 10th standard son who keeps telling me that mama mere liye time do, I have my daughter who needs my time, I have my in-laws to look after, I have my kitchen work to be finished, I have my other duties along with being a homeopath. So I think we all must pat our back. We must congratulate ourselves, not just today, but every day, कि we are able to do all this. I really feel proud, not just for me, but for all of us, that we are doing it. हम लोग कर रहे हैं. And अगर ये जर्नी में किधर हमसे कोई भी छोटी सी चूक हो गई, or somewhere we neglect by mistake either our work or our patients or our kitchen work or our children, it's okay, we are humans. I keep telling myself, I keep telling my clients, it's okay. Don't kind of be very hard on yourself that how am I not able to give my 100%. I will try to give my 100%, but somewhere, sometimes, if my child is sick, if my in-laws need me more, if my parents call me for some function which is needed to attend, and I have to, for the time being, keep my studies aside, if I have to keep my clinic aside, and I'm doing that, my pregnancy, my delivery, my other menopausal symptoms make me take a sabbatical for a few months or a few weeks, it is okay. It is okay. Please be considerate. Please have empathy to all of everybody. Okay. So the next talk will be done by Yogita ma'am, our Yogita ma'am herself. Please. योगिता मैम है? यस, तब तक सर निताल मैडम आ गई हैं। यस, यस। What do I say? Nital ma'am is here. Is Nital ma'am there? Yes, ma'am. Yeah. Today on this Women's Day, I feel really so proud about Dr. Nital ma'am. Dr. Nital Jain, I hardly knew her before a year. But today she's become like, Ashok sir ki, मेरी और किसी की भी हाथ, आँख,
कान, नाक, कुछ भी work, we need any work to be done. Dr. Sachin sir will also agree to this. Anybody can call up Dr. Nital Jain, anybody can, message her. And to my surprise, she is ready with the entire material without having to actually, give the details. So she understands the requirements of everybody. I am so proud about this homeopathic doctor and really thankful for Dr. Nital Jain to be in our group. I welcome you to speak to all of us about your journey. Thank you, ma'am. And let me clear, it's Nital, not Nital. सर हमेशा रॉन्ग करते हैं। अशोक सर निताल करते हैं, इट इज नितल मैम, सर को बोला। हाँ, थैंक यू मैम। मेरी जर्नी में शुरू से एकदम बताऊंगी कि पहले तो मैं एलोपैथी प्रैक्टिस करती थी मैम। यहाँ पे पीडियाट्रिशियन है सीनियर, वहाँ पे जॉब करती थी। फिर बच्चों की पढ़ाई वगैरह मैनेज नहीं हो रहा था, फिर बीच में गैप आ गया 10-12 साल का, तो इट्स अ ह्यूज गैप। तो वापस से जब स्टार्ट करना था तो कारण बनी मेरी बेटी। उसने कहा कि मम्मा, मेरी फ्रेंड की मम्मी भी डॉक्टर है, वो गाड़ी पे छोड़ने आती है और वो कैसे रहते हैं, आप भी डॉक्टर हो तो मुझे भी प्राउड फील होगा, आप भी क्लिनिक शुरू करो। फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, घर में चर्चा शुरू हुई कि इसे वापस प्रैक्टिस शुरू करना चाहिए। और फिर मेरा सर्च शुरू हुआ। फिर यहाँ पे जो होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं उनको मैंने पहले अप्रोच किया, तब उनसे पता चला कि सहगल सर की बुक्स है। फिर वो बुक्स सर्च करने के बहाने मुझे मैंने एफबी पे यूट्यूब पे शेयर किया। फिर रुचि मैम का वीडियो सबसे पहले देखा था। फिर उनसे सुना मैंने कि HSH और HHF ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे आप जाओ, उनके वीडियोस देखो, उनके केसेस देखो। और बट उसी लिंक थ्रू कहीं से मुझे HSH में एंट्री मिल गई। तो मैं थी, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ समझता नहीं था। फिर क्योंकि मैंने पीडियाट्रिक में प्रैक्टिस की थी तो एडल्ट का ज्यादा नॉलेज नहीं था, क्योंकि 7-8 साल मैंने पीडियाट्रिक में ही किया था। तो ऐसे लगा कि नहीं, एडल्ट का भी थोड़ा मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने CCMP किया। एक अभी जो होम्योपैथ्स के लिए फार्मेकोलॉजी का गवर्नमेंट कोर्स आता है, सर्टिफिकेट, वो किया। और वो करते करते मैं देखती थी ग्रुप में, लेकिन कुछ समझता नहीं था। फिर बेसिक कोर्स का एक बार देखा सर का कि बेसिक कोर्स ले रहे हैं। फिर मैंने मेरे CCMP कोर्स के बाद मैंने सर को अप्रोच किया कि सर ये क्या है बेसिक कोर्स वगैरह। फिर सर ने मुझे गाइड किया। फिर पिछले साल मैंने पूरा बेसिक कोर्स अटेंड किया। शुरू में कुछ ध्यान में नहीं आ रहा था, लेकिन बस पढ़ना छोड़ा नहीं। और केसेस जो भी आ रहा था, वो अगर कोई मेरे पहले के मैसेजेस देखे और अभी के मैसेजेस देखे तो वो भी बोलेंगे कि हाँ, अब ये कुछ तो ट्रैक पर है। पहले तो मुझे खुद को ध्यान में नहीं आता था कि मैं क्या एनालाइज कर रही हूँ। लेकिन थैंक यू टू अशोक सर फॉर क्रिएटिंग सच अ नाइस प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द ऑल बिगिनर्स लाइक मी। बस यही से शुरू हुआ। और जब सीखती गई तब मैंने सबसे पहले घर में मेडिसिन देना शुरू किया। सबसे पहले बेटी को ही दिया था, बेलाडोना दिया था उसे। और वो केस मैंने रुचि मैम के ग्रुप में भी शेयर किया था। मैम को बस बताया था तो मैम बोले कि अच्छा है, तो मैम ने वहां शेयर करने के लिए बोला था। लेकिन वहां तब मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस था भी नहीं, वो एक ही रेमेडी पड़ी थी। फिर मेरे पापा जब बीमार हुए, वो ICU में थे और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे एलोपैथी मेडिसिन को, और वो बता भी नहीं पा रहे थे क्योंकि वो सेमी कॉन्शियस थे। लेकिन वो जो बोल रहे थे, कभी बीच बीच में जो बात कर रहे थे, उस पर से उन्हें जब मेडिसिन दी, ही रिस्पॉन्डेड ब्यूटीफुली आफ्टर दैट। तो फिर मैंने मन में ठान लिया कि ये तो माइंड मेथड से दिया है तो बस यही करना है, दूसरा तो करना ही नहीं है, चाहे जितना टाइम लगे। फिर दूसरा सारा छोड़ के बस इसी पे कंसंट्रेट किया। दिल्ली में आज भी 3-4 घंटे लगभग हो ही जाते हैं पढ़ती रहती हूँ कि जब तक तो कुछ आए नहीं, क्योंकि अभी नया क्लिनिक शुरू किया है तो पेशेंट का फ्लो अभी कम है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। और तब तक ये जो वेटिंग पीरियड है मैं स्टडी के लिए यूज कर रही हूँ। और थैंक यू फॉर दोज वर्ड्स फॉर मी। थैंक यू मैम, थैंक यू अशोक सर। Nital ma'am. There is one student in our basic primary course whom I really get frightened of. क्योंकि
कुछ भी हमने डाला तो शी इज वेरी क्विक लाइक नितल मैम एंड शी इज रेडी टू गिव हर आंसर्स एंड she is ready to learn always, and I see all her inputs in all the cases that we present. Dr. Nidhi Jain, are you there? Dr. Nidhi Jain? Yes, ma'am. Yes. Yes, Hi, I want to see you and I want to talk to you. How is your journey and how do you find Team HSH, please? जी, यस मैम। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी इतने अच्छे से होम्योपैथी कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे 1 महीना हुआ है माइंड मेथड ज्वाइन किए और मैंने कम से कम 2 से 3 केस सॉल्व कर दिए। मुझे बिल्कुल विश्वास भी नहीं हो रहा कि मैं इतना क्लासिकल में कर सकती थी। और यहाँ मुझे अशोक सर ने बहुत ज्यादा हेल्प की और सभी जितने मेंटर हैं, कभी भी अभी हमें जरूरत पड़ती तो कभी पीछे नहीं हटते, हमको हमेशा गाइड करते हैं। जैसे मैम आप हो गए, नीतल मैम हो गई, हरमीन मैम हो गई, योगिता मैम हो गए। मुझे विश्वास ही आज तक नहीं होता कि मैं इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में आ गई। अगर कोई और भी ज्वाइन करे तो मुझे बहुत खुशी होगी, जितने लोग ज्वाइन कर सके इस बेसिक कोर्स को। और सभी लेडीजों को आज वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई। ये मुझे पहले बोलना चाहिए था, लेकिन मैं खुशी के कारण बोल नहीं पाई। मुझे बहुत ही अच्छा लगा HSH में आके। अशोक सर ने भी मुझे बहुत इंकरेज किया। मैंने को सितंबर से मैंने ये माइंड मेथड देखा। मैंने HHF के 3 नाइस मैन के देखे मैंने वीडियो। फिर मेरे एक फ्रेंड ने अशोक सर का मुझे बताया, मैंने सर से बात की, फिर सर ने मुझे HSH ज्वाइन कराया। फिर सर ने बताया बेसिक कोर्स शुरू होने वाला है, तो मैंने फिर ज्वाइन किया सर को। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म में आके। बहुत ही ज्यादा खुश हूं मैं कि मुझे आगे उम्मीद नजर आ रही है कि मैं एक अच्छी सक्सेसफुल होम्योपैथी बन सकती हूँ। थैंक यू मैम। Thank you so much. इतने अच्छे शब्द। उम्मीद is such a nice word that you used. We all are with this hope that our HSH team goes ahead, बहुत ही अच्छा काम करे और निधि मैम जैसे, नितल मैम जैसे each and every student or learner of homeopathy becomes confident to teach others. जैसे रक्षा मैम ने बोला, जोत से जोत जलाते चलो। It is a legacy that we pass on. We know something and when you always know that learning एक है, लेकिन when you teach, you double learn. You teach others, you double learn it. So I think this is a very good sharing that is happening. Dr. Ranjita Shastri, are you there? I would say one thing about Dr. Ranjita. Hi, Dr. Ranjita. Hello, she has ma'am. always been good evening, so active in our groups and so active in understanding the remedies and presenting cases also. And even, hi, Ranjita. Hello, ma'am. Good evening. How are you? Good evening. Happy Women's Day to you. Wish And you the please same, ma'am. share your journey with us. Sure, ma'am. First of all, you're a very, very wonderful host. You are introducing everybody so heartfully, and it is coming from within. So I can really feel that vibes from you, ma'am. So you are really very wonderful human being as well as a very wonderful teacher. So, ma'am, I'll start my journey with the quote. A beautiful woman draws strength from troubles, smiles during distress, and grows stronger with prayers and hope. You are one among them. Wishing you a very happy Women's Day. So I'll begin by saying, as it is today's Mahashivratri, which is coming on Women's Day. So here I would like to say that Ardhanarishwara Tattva of Shiva is coming up. It is, combining with the woman power. So it is a very auspicious day to present today. So to begin with, I am a product of Rao sir. So I learned when I was learning from Rao sir, I didn't knew that HHF, Rao sir is a founder of HHF. So I passed out in 2008, and after passing out, when I was in fourth year, I came across a book, Louis Hay.
तब मुझे लुई हे का पता चला था, तो माय सीनियर्स वर रीडिंग लुई हे। तो मैंने पूछा ये क्या बुक है ना, मुझे पता नहीं इसके बारे में। तो बोला नहीं नहीं ये बहुत, एंड टू बी वेरी फ्रैंक, लोग हाइड करते हैं टू शेयर देयर नॉलेज। तो बोला नहीं नहीं ये कुछ नहीं, दे वर हाइडिंग। तो समहाउ वो थोड़ा सा परसिवियरिंग नेचर एंड थोड़ा सा क्यूरियस क्यूरियस हूं मैं थोड़ी सी, बट एक इनहिबिशन रहता है कि पूछूं नहीं पूछूं, एंड देन समहाउ आई परसिवियर्ड। तो मुझे पता चला कि इसमें देयर इज साइकोडायनेमिक्स एंड ऑल। तो सिंस देन मैंने छोड़ा नहीं कि नहीं मुझे ये सिस्टम पता करना है कि क्या है। एंड देन आई एम फ्रॉम मोतीवाला कॉलेज नासिक, बट आई एम फ्रॉम बॉम्बे बेसिकली। So, in the fifth year, for the internship period, तो we get OPDs, 3 months OPD. So medicine OPD जब भी मिला था, तो my senior डॉक्टर कुंडू सर from मोतीवाला कॉलेज, तो he used to give us chance कि बच्चा आप रेमेडी दे दो। तो मैंने कहा सर मुझे ये सिस्टम सीखना है। तो सर ने बोला बेटा ये ROH पढ़ो, आप ये पढ़ो वो पढ़ो। तो तभी इतने सोर्सेज, we didn't have so many sources. तो आई सेड ओके। फिर somehow my senior told me कि there is a doctor in as it is you're from Bombay, तो थाने में we have Rao sir who is practicing in this mind method, and तभी he was attached to Segals वो टाइम पे, it was in 2008। तो मैंने कहा प्लीज आप that senior, I took the address from that senior and then I went to Rao sir, and वहां पे I saw Rao sir, the demeanor, the way he looked, I was very taken aback। अरे ये सर है, I should not say that, but he was like that। I said ये क्या सिखाएंगे? And then it is a very different thing for me कि I sat in front of sir and sir came dragging his chair towards me। हाँ बता रहे क्या चाहिए तेरे को? मैंने बोला सर मुझे आपसे सीखना है। तो सर सर क्या सीखना है बता। मैंने बोला सर आप जो भी सिखाएंगे, मुझे माइंड मेथड, ये जो रूब्रिक्स फॉर्म करना, तो मुझे वही सीखना है। तो सर ने बोला ठीक है कल से आ जा। एंड सर के एक असिस्टेंट है रूपेश, तो सर बोले रूपेश से बात कर लो एंड कल से आ जाओ। द नेक्स्ट डे आई स्टेड इन घाटकोपर। सो फ्रॉम घाटकोपर आई टू ट्रैवल टू थाने, एंड देन नेक्स्ट डे से आई स्टार्टेड। देन पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट वन थिंग आई कैन सी कि आई स्टार्टेड ऑफ विथ माइंड मेथड इटसेल्फ। तो आई डिडंट गो इनटू क्लासिकल्स, एलोपैथी वेलोपैथी, नथिंग एल्स। सो by grace of Rao sir, I started itself with mind method. So I saw sir Just बस देख रहे हैं। excuse me, Dr. Ranjita and Dr. Smita, as Yes, Dr. Ranjita said कि ये sir है करके, this is the expression which Dr. Ranjita says because sir yeah, was very simple, very yeah, simple, and I've been a absolutely, student of Rao sir. Okay, so he was absolutely, that simple that as Dr. Ranjita said, no, हाँ बोल क्या चाहिए तुझे? This is the way absolutely, he used to uh, talk to the students, even with the patients. No, he used to talk in such a manner because he felt each and every member, each and every patient is his family. So this is absolutely. the reason why he used to talk in such a way. And I am glad to know, Dr. Ranjita, you are from Bombay and a student of Rao sir. I myself also from Bombay, Thane, and this Okay, was the crux of it. So usually they say, no, be a layman. Be a layman and absolutely. understand. That is what Rao sir used to say. Okay. Sorry to Ab- interrupt in between, but no, since you said this, so I felt and I was reminiscing the memories. I felt of sharing this. Thank you so much. sure, sure. Thank you, ma'am. All best So wishes to then, you. thank you, ma'am. Wish you the same, ma'am. So then Thank you. we used to see sir used to sir की आदत थी, sir clinic में बैठते हैं, and then there are 4 to 5 learners over there. I used to be in the corner because I have just joined, and then तू बता चल तेरे को क्या लगता है। मैंने बोला सर मुझे समझ में नहीं आता। तो तू देखते रहे ना आएगा तेरे को। and then within a fraction of seconds I used to look at them, ये नाट्रमुरे ह्याला नाट्रमूर देऊन टाका, ह्याला इग्निशिया द्या। मैंने बोला सर ऐसे कैसे होता है। and I am a kind of, आई एम नॉट अ पर्सन हु लिसन वेल। सर मेरे को कुछ समझ में नहीं, आप बताओ मुझे। तो अरे समझेगा, अरे समझेगा, दिस इज द वे द मुंबई पीपल टॉक लाइक दैट। तो ऐसा सर कभी समझेगा, मेरे को नहीं समझेगा। तो नहीं। एंड देन 1 or 2 टाइम्स क्या करते थे ना, देयर वाज अ सबॉर्ड साइड रूम वेयर डिस्पेंसिंग मेडिसिन वाज गोइंग ऑन, तो वहां पे सर बिठा देते। एंड देन चल भीम, एंड सर यूज्ड टू कॉल मी भीम बिकॉज ऑफ माई पर्सनैलिटी। सर यूज्ड टू कॉल मी भीम। तो चल भीम साइड में बैठ जाते, चल अपन केस लेते। देन सर टुक मी। तो 1 or 2 टाइम्स आई क्रैक द रेमेडी एंड फ्लाइट एंड फाइट कैसे पेशेंट जा रहा है, तो अगर फ्लाइट में जा रहा है तो ये, फाइट में जा रहा है तो ऐसे। तो 1 or 2 टाइम्स आई क्रैक थायोसाइमस।
मैंने बोला अरे भीम तू तो सही है रे, मैंने बोला सर सच में? अँड देन आय वॉज सो सरप्राइज. बोला अरे रुपेश ह्याला हायोसायमस देऊन टाकायला त्यामुळे ही बोलली ना. बोला सर गलत हो गया था. देखेंगे रे, गलत हो गया तो देखेंगे. मैं बोला सर सर प्लीज वो पेशेंट कुछ हो जाएगा सर, मुझे नहीं आता. बोला नहीं नहीं तू बराबर है, वो हायोसी है, वो स्ट्रैम ही है. So this is how it started. So then 2009 till 1 year I was with sir, and then sir used to be a very big push. हमेशा ना there used to be थाने sessions. So every Thursday used to मेरे को तू लिखती अच्छे चल तू notes बना. बोले सर मुझे नहीं आता. तो तू बना रे, तेरे को आएगा. And then he used to push me to write notes in this way. So sir was always there, a backbone for me. So 2009 I got married, and then my husband is a naval officer. So I travel a lot. So and then I lost the touch with homeopathy. मुझे लगा I'll never practice. I don't know why, that kids and all. Then, but I had that repertory, that printed synthesis wala, the 9.1 version. I had that print out with me. So that is how I used to see the rubrics in between. I used to prescribe family members, and then I just remember whatever I studied at that time. After that, I lost the touch. Then 1 or 2 times one day I would like to tell that my son was coughing a lot. He was in LKG at that time. He came from the playgroup, and then he came and he's coughing continuously. खेल रहा है, cough कर रहा है, खेल रहा है, cough कर रहा है. मैं बोला यार ये क्या? So I remembered that Rao sir had told me कि ये high spirited है. तो चलो देखते. I gave Hyos 3x single dose, and then to my surprise I found it that my son didn't cough for at least 2 hours. उसके बाद में बोला हाय ला ये क्या हो गया? And then I called Rao sir and said, sir यही तो कमाल हो गया. तो अरे ऐसे ही होता है, ऐसे ही कर, दवा देते रहे, तू देते रहे, होएगा. And then I lost touch with sir, and then till lockdown somehow here and there I used to practice. But in the lockdown was a turning point for me, and there were a lot of online sessions here and there. Again I got in touch with HHF, and then Ruchi ma'am. I got in touch with Ruchi ma'am. Then how I came across HSH, I would like to share it. That I was sharing a case in Ruchi ma'am's group. तो अशोक सर अप्रोच में कि दीदी आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है दीदी, व्हाई डोंट यू प्रेजेंट हियर? एंड लेट मी टेल यू, आई एम अ वेरी इनहिबिटेड पर्सन. लाइक क्या ये तो सबको आता है, मैं क्या शेयर करूं? नहीं ऐसा नहीं होता है, आप शेयर करो. मैं सर ट्राई करती हूँ. एंड देन नाउ अशोक सर इज सच अ बिग सपोर्टर. मैं हर बार सर कम्स विद अ प्रपोजल, ऐसे सर नहीं होगा, आई गिव सम रीजंस कि नहीं आपको करना है दीदी आप करो. So Ashok sir is a very big supporter. So after that I came into HSH group, and then I started presenting. 1 or 2 times I presented, and the Mathume Pranam series was the first time where I had actually prepared a PPT which I had never done in my life, and that was also because of only and only because of Ashok sir. So after that, then the thinking caps were on all the times, and then Anu ma'am and Ruchi ma'am, they're the biggest backbones whom we learn so much. Ruchi ma'am, she is a wonderful prescriber, and since then I've been attending all her rubric sessions, be it case sessions, common remedies, whatever. Ruchi ma'am's message comes, and then I'm like, ये अभी seminar होने वाला है, webinar होने वाला है. So similarly, Anu ma'am in this group. So this is how I was lucky in that sense that since beginning I've been attached to mind method. But the only problem is I'm a very inhibited kind of person. क्या शेयर करना है, सबको आता है, मैं क्या बताऊं? नहीं, आपको करना चाहिए कि your horizon increases. So that is how I started sharing somehow slowly. So this is I'll share a very unconventional case today. Like we began the quote with saying that a beautiful woman draws strength from the trouble, smiles during distress, and grows stronger and stronger with prayers and hope. You are one among them. So somehow there is a coincidence that this quote is very much suiting to today's case of mine. So mine are, and the most important thing is I don't record cases because as I told you, I'm very reluctant in that sense. Systematically maintain karna, it doesn't happen with me. So now onwards, when Ashok sir has started pushing me, I've started recording the cases. Before that, they're just there in the memory somehow, and then I used to share. So this is one among the case which I recorded. So a lady had come to me. She's 32, 33 years of age. She's having chronic cough since 2014-15.
So she came with her husband and a daughter who is around 11-12 months, yeah, 13-14 months. And then she came कि डॉक्टर मुझे आपसे दवा चाहिए. I said बताइए क्या प्रॉब्लम है. तो दिस लेडी सेड कि मुझे ना बहुत खांसी है एंड मेरे से बात करते करते भी शी वॉज कॉफिंग अलॉट, बहुत खांसी कर रही थी. तो मैंने कहा अच्छा ओके, आप थोड़ा पानी पीजिए, रुक जाइए. एंड देन आई हैड ऑन दैट पूजा वाला टाइम था, तो शी केम होम फॉर कंसल्टेशन. तो कैंफर चल रहा था घर में. तो डॉक्टर आप ये बंद कर देंगे क्या, मेरे को बहुत सफोकेशन हो रहा है. देन इसको एक बंद कर दिया एंड देन शी स्टार्टेड सही. तो मैंने कहा कि क्या हो गया, तो बोले 2014-15 से ही शुरू है मुझे. तो मैंने बोला कि अच्छा फिर आपने क्या किया, तो बोले बहुत सारे डॉक्टर्स, डिफेंस ऑफिसर वाइफ, शी इज डिफेंस पर्सनल्स वाइफ. तो शी दे ट्रैवल लाइक अस, दे ट्रैवल अ लॉट. सो शी हैज शोन टू मेनी civilians and the defense doctors also, but all in way. So finally somehow somebody told them about me and then she came to me. तो बहुत तकलीफ होती है मैम, आप इसका कुछ कीजिए. तो मैंने बोला अच्छा तो आपको कब से, तो 2014-15 में जब फर्स्ट अटैक हुआ था तब क्या कर रही थी, क्या हो रहा था. तो बोले जब मैं रैंप वॉक कर रही थी तब शुरू हुआ. मैंने बोला अच्छा रैंप वॉक. एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल, द वे शी केम, शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी फ्लॉलेस स्किन, वेरी फेयर कॉम्प्लेक्शन, यू नो, वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल. तो मैंने कहा अच्छा आप, शी सेड मेरा अटैक तब स्टार्ट हुआ तब व्हेन आई वाज ऑन अ रैंप वॉक. आई सेड अच्छा रैंप वॉक, यू आर अ मॉडल. तो बोला हाँ आई यूज्ड टू डू मॉडलिंग बट अभी बच्ची छोटी है तो आई एम नॉट एबल टू डू दैट. तो लेटर ऑन मैंने कहा फिर अभी आगे करने का प्लान है. तो बोला बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाएगी देन आई विल डू इट. तभी क्यों आपको क्या हो गया था, तभी आपको क्यों ऐसे खांसी हुई. तो बोले मुझे ना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि कहीं मैं गिर जाऊं, कि कहीं मैं कुछ मेरा शो अच्छा जाएगा नहीं जाएगा. ये एंटिसिपेशन था मेरे माइंड में. बोले क्यों एंटिसिपेट कर रहे हो. तो उसने कहा कि एक्चुअली क्या है ना कि डॉक्टर मुझे ना फिर मैं प्रूव नहीं कर पाई अपने आप को. तो मैंने बोला अच्छा क्यों नहीं प्रूव कर पाओगे आप. तो उसने बोला कि नहीं मुझे किसी को प्रूव कर. मैंने बोला किसको. तो शी सेड कि मेरी मदर को. मैंने बोला मदर को क्या प्रूव करना है आपको. तो शी सेड कि अभी डॉक्टर वो लंबी चौड़ी कहानी है. मैंने बोला मुझे चाहिए, आप बताओ तो आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि मुझे आपकी पर्सोना फाइंड आउट करना है, सिर्फ खांसी ठीक ठीक करने से नहीं होगा. हस्बैंड वॉज देयर. देन मैं बताऊं इनको. तो हस्बैंड ने बोला सी ऑल योर्स, अगर आपको चाहे तो मैं बाहर चला जाता हूँ, आप डिस्कस करो. तो शी सेड नहीं नहीं आप रहो, आई विल डिस्कस द केस विथ यू. तो शी सेड आई हेट माई मदर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. ऐसे शुरू किया उसने. मैंने बोला अच्छा क्या हो गया. तो बोले मुझे मेरी मदर बिल्कुल पसंद नहीं है एंड मेरे लिए वो मर चुकी है मेरी मदर. तो मैंने कहा ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या हो गया बताओ. एंड कोई उसके फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं, ब्लैंडली प्लेनली उसने ये बात कही मुझसे कि आई हेट माई मदर लाइक एनीथिंग. मैंने बोला क्या हो गया. तो बोले कि नहीं एक्चुअली वी आर टू सिस्टर्स एंड वन ब्रदर. दिस लेडी इज द मिडिल वन. एक एल्डर सिस्टर है, एक यंगर ब्रदर है. तो हमारे घर में पहले से ही देयर हैज बीन अ डिस्पैरिटी कि दीदी तेरे से ज्यादा सुंदर है और वो तो लड़का है. शी इज फ्रॉम लिटिल ऑर्थोडॉक्स फैमिली. तो दिस गर्ल लिटिल आउट ऑफ द ट्रैक है पहले से, कि लोगों ने बोला मैं उनका अपोज करूंगी, दैट टाइप ऑफ गर्ल, यू नो, लिटिल क्रांतिकारी टाइप्स. तो शी सेड कि अच्छा. फिर मैंने पूछा क्या हो गया फिर. तो बोले कि नहीं मुझे हमेशा ना नहीं लड़कियों ने ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए. तो मुझे कभी फैमिली ने मुझे परमिशन किसी चीज की दी नहीं, बट मैं हमेशा रेडी होना चाहती थी, मैं मॉडलिंग करना चाहती थी. लोगों ने मुझे कभी चांस नहीं दिया. मैं स्कूल में किसी ड्रामा में पार्टिसिपेट करूँ, तू लड़की है तू क्या करेगी पार्टिसिपेट करके. मेरे भाई को भेज देते, मेरा भाई एक नंबर का डम्ब है, लेकिन उसको एनकरेज करते थे. मुझे बोलते तू घर में बैठो, तू बहुत ज्यादा फुदक फुदक करके ना हमारे खानदान का नाम खराब करेगी. मैंने बोला अच्छा फिर. तो बोले फिर मैं क्या करूँ. फिर हर जगह मेरी मम्मी मुझे जलील करती थी. पीटीएम में देखो मेरी बेटी आ गई. एंड देन अननेसेसरली शी यूज्ड टू प्रेज देयर कि मेरी बड़ी बेटी बहुत होशियार है, ये देखो सिर्फ मॉडलिंग में लगी रहती है एंड इसको तो पढ़ाई में कुछ पड़ी नहीं है. एंड व्हेन हर ब्रदर्स फ्रेंड्स यूज्ड टू कम, हर मदर यूज्ड टू से हाँ अभी तो देखा इसका इसके साथ चक्कर शुरू हो जाएगा. मदर इज वेरी वेरी सस्पिशियस. सो दिस लेडी हैज डेवलप्ड सो मच ऑफ हेट्रेड इन द माइंड. तो अभी ऐसे हो गया. एंड देन शी सेड कि कम वॉट में मुझे तो मॉडलिंग ही करना है. दिस गर्ल रैन आउट ऑफ द हाउस. शी केम टू बॉम्बे एंड देन मॉडलिंग वगैरह करके समहाउ स्टिल शी इज हैविंग ए कॉफ वाला एलिमेंट्स है ही. इसके साथ ही शी फेल इन लव विद अ पर्सन एंड देन 2 years शी वाज इन लिविंग विद दैट पर्सन. शी गॉट मैरिड टू हिम एंड देन हस्बैंड नोज एवरीथिंग एंड लॉट ऑफ एंगर इश्यूज की गुस्सा आता है. तो मैंने बोला कि अभी क्या लगता है आपको. तो अभी कुछ नहीं, नाउ आई एम मैरिड टू दिस पर्सन, हस्बैंड इज वेरी वेरी केयरिंग,
बट प्रॉब्लम ये है कि मेरी मदर को, मैं अभी भी मेरे मदर के साथ मेरा कॉन्टैक्ट्स नहीं है, फैमिली के साथ कॉन्टैक्ट्स नहीं है, स्टिल देयर इज अ डिस्पैरिटी कि नहीं, दीदी की जो इसकी एल्डर सिस्टर के बच्चे हैं दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वो लोग बहुत वो अच्छे से ख्याल रखते, तू तो बस मॉडलिंग एंड इसमें ही पड़ी है, तू तो बच्चों का ख्याल नहीं कर पाएगी, तो एंड देन तू लाइफ में सक्सेस नहीं हुई है, एंड यू, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन भी होता था काफी बार घर से, अपने घर वालों से। सो एंड देन इन बिटवीन शी सेड कि डॉक्टर आपको क्या लगता है कि ये सब बता के कोई फायदा होगा, मतलब इसका तो कोई फायदा नहीं ना ये सब बता के। मैंने बोला बिल्कुल फायदा, ये सारा कुछ आपकी जो खांसी है ना वो एग्जैजरेट कर रही है, उसको एग्रीवेट कर रही है, तो आपको जो लग रहा है वो बताइए। तो शी सेड माय हस्बैंड इज वेरी गुड बट नाउ ब्रदर इन लॉ ही इज somehow trying to taunt in between कि ये तो कैरेक्टरलेस है, मॉडलिंग करके आई है, लिव इन में रह के इसने मेरे ब्रदर से शादी की है, तो इसका क्या, क्या ये लड़की घर संभाल पाएगी, ये तो हमारा घर तोड़ने आई है एंड ऑल, शी हैज टू लिसन अ लॉट। तो शी हैज लॉट ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स अ ब्रदर इन लॉ ऑल्सो अभी। तो डॉक्टर आपको लग रहा है कि मेरा खांसी ठीक होगा? एंड देन आई सेड आई वाज रियली टेकन अबैक कि लड़की है क्या, मतलब व्हाट अ दबंग लेडी शी इज। एंड उसने भी ये कहा कि हर फादर ही वाज इनटू सम लिटिगेशंस एंड ऑल, कोर्ट केसेस हो गई थी, तो दिस गर्ल वेंट everywhere and then this girl fought for the dad also. Mother was saying ये तो and no appreciation from the family, but फादर, मैंने बोला फिर फादर के साथ अभी रिलेशंस कैसे? तो शी सेड मेरे फादर भी मम्मी की तरफ हो गए क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाते, मेरी मम्मी का सारा कुछ डोमिनेशन है, एंड शादी तो मैंने कर ली, नाउ आई एम वेल सेटल्ड, लेकिन फिर मम्मी बोलती है कि मैंने दहेज दे के इसको किया है, पता ये इसका तो कुछ ये नहीं था, इसका तो कोई यही नहीं था, ये तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाती थी, सारा कुछ मैंने लाइफ सेट करके दिया है इसका। सो ये पूरा से है उसका। तो आई वॉज रियली टेकन अबैक एंड दिस केस वेंट ऑफ फॉर ऑलमोस्ट 1.5 hours एंड इट वेंट टिल नाइट 9 o'clock। आई सेड कि मैं शांति से थोड़ा सोच के आई गिव यू मेडिसिन टुमारो, यू प्लीज कम टुमारो। एंड देन आई वॉज ऑल्सो, हाउ कैन अ मदर बी दिस थिंग टू द डॉटर। तो फर्स्ट सेंटेंस ही उसने ऐसे बोल दिया कि मेरी मदर मेरे लिए मर चुकी है, आई हेट माई मदर। मैंने बोला यार ये क्या है, मतलब क्या लड़की है। देन व्हेन आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन रूप ब्रेक्स आई केम अक्रॉस सच अ the remedy. I was really taken aback, shall I prescribe this medicine or no, but as it is we are unprejudiced observer, तो हमको देना ही है। तो what rubrics I took here is ailments from abused after being, because she has been abused in the sense mentally, the mother is using her power in a wrong way, and what she said कि delusion dead mother is, मेरे लिए मदर मर चुकी है। देन आई टुक लिबर्टिनिज्म, व्हाट शी डिड ना कि घर से बाहर निकल के कुछ और करके दिखाना, सो आई टुक लिबर्टिनिज्म। एंड देन अभी क्या लगता है, तो व्हाट शी सेड ना कि मेरा कोई है ही नहीं, कि मेरे मम्मी पापा के साथ कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं है, तो फोरसेकन फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग बिलव्ड बाय हिज पेरेंट्स, वाइफ और फ्रेंड्स। तो दिस रूब्रिक आई टुक। एंड देन व्हाट शी सेड ना, खांसी खांसी कभी शुरू हुई थी कि जब भी वो रैम कर रही कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी नहीं, तो आई टुक देयर एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन। एंड देन शी हैड टोल्ड मी कि अरे यार पता नहीं क्या हो रहा है अंदर, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक होगा कि नहीं एंड ऑल। तो आई टुक एंजाइटी डार्क। एंड देन आई फेल्ट दिस लेडी इज वेरी ऑडेशियस, ऑडेसिटी आई टुक देयर कि दिस इज अ वेरी डिफरेंट स्टेप टू बी टेकन इन सच फ्रॉम एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली। एंड दिस गर्ल इज सटली, शी इज एनवियस ऑफ अ सिस्टर एंड सिस्टर्स चिल्ड्रन कि हाँ वो तो मेरे से ठीक ही है, वो तो मेरे से ज्यादा ही है, मेरे को प्रूव करना है, मेरे सारे फैमिली को ही प्रूव कर रहा है। तो द रेमेडी केम आउट वाज नैट्रामोर। एंड द लास्ट रूब्रिक विच आई थॉट अरे इसमें भी नैट्रामोर है, नेकेड वांट्स टू बी। हम जनरली क्या सोचते हैं ना कि नैट्रामोर इज सच अ सीक्रेटिव पर्सन कि वो रिवील ही नहीं करेगा, and this girl at the first meeting itself she revealed so deeper things, you know what, and I thought कि अरे यार ये नैट्रामोर है, कैसे हो सकता है। and the second remedy coming was pulsatilla, and this girl did not cry even a single tear in front of me, she was so masked, that much I got a feel कि नहीं। and मैंने बोला अभी आप चाहते क्या होती, she said मुझे मेरे ब्रदर इन लॉ को और मदर को मुझे सबक सिखाना है। So here I got hatred and revengeful. So this was the rubric which helped me to eliminate pulsatilla, and I gave her natramor 1 and 3 doses followed by SL for 15 days. And after 15 days she came back.
तो आई सेड आई वाज रियली लिटिल स्केप्टिकल, पता नहीं क्या होगा इस केस में, बट देन चलो ट्राई करते हैं. दिस गर्ल केम, she told me, doctor, I'm 60% better. तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? तो आई वॉज ऑल्सो सो हैप्पी, रियली. तो शी सेड यस, आई एम 60% बेटर. जो पहले जो खांसी होती थी ना, अभी उसके इंटरवल्स बहुत कम हो गए, मेंटली रिलैक्स लग रहा है मुझे. एंड लेकिन मुझे वो जो हेट्रेड वाला थॉट है ना, अभी भी गया नहीं है. वो है, बट उसकी इंटेंसिटी काफी कम हुई है. तो व्हाट आई डिड इज आई केप्ट दैट गर्ल ऑन Natramur 1M once a week. So now this is around 6 months old case. So now this girl is 90% better with Natramur. So this was a little eye-opener case for me. I said, Natramur can be such unconventional presentation also. It is not that every time Natramur is secretive, she will be that, she'll keep quiet. This girl has so much of injustice, cannot support. And the naked wants to be was really the eye-opener rubric for me, because I never saw, we always see Hyos or Stram or Pos in that, but we never see Natramur in that. When I saw it, so this was a really wonderful case and little unconventional for today's concept, because mother ही उस lady की दुश्मन है. उसको mother के लिए कितना hatred है ना, जो woman mood का जो seed है, her mother he is an enemy to this girl. So very unconventional Natramur I thought of sharing here today. And so that's what I wanted to present today. I hope it was interesting and somehow useful to all of you. So this was my presentation. Very, very interesting and very nice presentation. Thank you, Ranjita ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. So happy to learn from each and every woman over here. I mean, so nicely their journey is presented, marriage and then accompanying husband wherever he is, taking care of the kids, keeping ourselves at the back, supporting our partner, supporting our children. And then, one fine day comes when we remember that no, apni identity bhi important hai, apne ko bhi kuch karna hai, and slowly start with one or two, and then gradually come back. Nothing bad. Like I told you, each and every one of us are beautiful, each and every one of us are courageous. So Dr. Ranjita ma'am has presented such a beautiful Dabang case of Natramur. Mur element otherwise also has some issues with the mother, na? So I'm very happy to listen to this case. Time hote aa raha hai. Each and every presenter here has been very, very successful in their own way. And we have a lot of other people who would like to talk also, but time ki kami ke karan, I would really request all you women out there and even men homeopaths to today and tomorrow just put in small words your journey in the group and some words of guidance to the other homeopaths, and that will really help each one of us. Dr. Ashok, I feel, should we end today's session here? Yes, ma'am. Yes. Yes. I want to thank all members, और आप सभी मेंबर्स को धन्यवाद जो आप HSH के साथ रहे और अपने अनुभव शेयर किए आप लोगों ने. और समय हमारे पास कम है, तो जो भी आपके और अनुभव हैं जो आप और शेयर करना चाहते हैं, प्लीज 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 ग्रुप में लिख दीजिए. और HSH की तरफ से जो भी एक सपोर्ट या जो भी एक हाथ चाहिए, तो HSH का हाथ आपके साथ है. और अपना अधिकार समझ के आप बोलिए, आपके केसेस हैं उन्हें शेयर करिए और आगे बढ़िए. थैंक यू मैडम. प्लीज. Dr. Ashok Avadia, thank you for always being there for all of us. And हम सबके, जैसे डॉक्टर मुलानी सर बोलते, सबके बड़े भैया. So सबके बड़े भैया इधर है to guide us, to help us.
and to encourage us always. Thank you for encouraging us. And like I said, happy Women's Day to all of you, all beautiful women there. And it wouldn't be possible without all the male members in and around us. So thank you for all men too. So just a second. yes, That yes, kindly let newcomers and beginners to come forward, and they need not hesitate. They might feel that what if I say anything and it is wrong? But newcomers and beginners to be pushed forward, and if need be, they be given 100% support. They need to be yes, encouraged so that the future generations of homeopaths also they try to continue with the legacy. Okay, so basic crux is the newcomers, the beginners, the novice, that person who has still studying, and many of the students, like in our times we didn't have this social medias and all, we need to refer to the book. But when social medias and all is available, especially the students and the newcomers, the novice, okay, those who have just passed BHMS, encourage yes. them so that they come forward. Thank you so much. Yes. Best HSH is one such platform where we encourage everybody to come forward, to ask questions, to present your cases, and to be, active on the group always. So today I take this opportunity to tell everybody that कोई भी question हो, कोई भी difficulty हो, please present in the group. So अगर कोई help personally नहीं दे पाएगा, group में देगा, और anyone from our team also can help them. So thank you today for being there in this wonderful session where we got to learn about perseverance, where we got to know about understanding, love, we got to know about the difficult journeys, we got to know about all beautiful mentors over here. Thank you everybody, and good night, Shubh Ratri to all of you. Happy Women's Day once again.